Namaskar and welcome to The Mindful Mirror, Episode 1. We will be covering today, in the first episode, is the purpose of our lives. We'll understand a few principles of nature, and after this episode, we will do our first meditation today. That is called the White Light Meditation. So let's start with the first episode. And like I always do, दो एक सवालों का सताया हुआ हूं मैं दो एक सवालों का सताया हुआ हूं मैं कौन हूं और किस लिए आया हुआ हूं मैं हर चोट पे मजबूत हुआ जा रहा हूं और हर चोट पे मजबूत हुआ जा रहा हूं और किस मिट्टी का बनाया हुआ हूं सो वी आर हियर टू अंडरस्टैंड मैं कौन हूं और किस लिए आया हुआ सबसे पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ आवर लाइव्स बिकॉज ओनली when we understand the purpose of our lives, we know the destination. We can decide the path, the speed, the mode of transport to reach our goals. So, what is the purpose of our lives? क्या करना है? क्यों आए हैं? हम ज्ञान अवस्था, the human world, हमारी जिम्मेदारी क्या है? Purpose क्या है? आप लोग सोचिए और बताइए. आप अपने अपने आंसर कमेंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं कि करना क्या है. वी आर हियर टू अंडरस्टैंड, समझना है. क्या समझना है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू विल आस्क मी, ओके आई अंडरस्टैंड कि समझना है, क्योंकि हम ज्ञान अवस्था है, हम समझने के लिए आए हैं. समझना क्या है? जो जैसा है, वॉट एवर इज, वी हैव टू अंडरस्टैंड अस फर्स्ट, our roles in family, relationships, society, and in nature. We don't have to change anything. We have to just understand, simply understand. And all of you who are married will know this. When you are in your courtship period just before marriage, whether it is love marriage or arranged marriages, you are at your best. And suddenly when you get married, things change 360 degrees. Suddenly, your time with friends is no more liked by your wife. Your time with your parents is no more liked with your wife. Or it could be vice versa. And suddenly you go out and tell your friends, यार मेरी वाइफ बहुत बदल गई है, या मेरा हस्बैंड बहुत बदल गया है. बदलना नहीं है साहब किसी को. We don't need to change anyone. We have to just understand it. As I told you that we will be giving you proposals or principles, and you have to जांच के उनको मानना है. You have to not only follow it simply because we are saying, understand it only and have a conversation with us. Use it in your lives, and then you tell everybody else. So that gets us to the first principle of understanding. हम जिस चीज को समझ पाते हैं, हम उसके साथ जी सकते हैं. हम जिस चीज को समझ पाते हैं, हम उसके साथ जी सकते हैं. Whatever we understand, we can live with it. To give you a good example, we in our earlier classes understood 2 के पहाड़े पढ़े, 3 के पहाड़े पढ़े, 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 6, and other examples like that. Once we knew that this is, and we understood that this is 2 by 2 is 4, we had no problems. कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें समझने में कि 2 गुणा 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 होता है. नाउ वी हैव कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. पहले समझ लिया कि क्या करना है, समझना है. फिर आया क्या समझना है, जो जैसा है. अब इसका प्रोसेस क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग? वेल, द प्रोसेस इज ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, द प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी. That is the process of self-exploration. Process of self-evaluation through self-investigation. मानना नहीं है, हमने कहा था मानना नहीं है, जांच के मानना है, समझ के मानना है. We have to understand our role in relationships and with existence and with nature as a whole.
So what is the process? We have to understand the contradictions through proposals. Whatever contradictions we have and the proposals we give you, you have to understand those contradictions through the proposals. And always remember, contradictions are within you and not outside. So whatever happens outside is the reflection of within. And only you are the deciding factor of your understanding and the path towards your goal. You are the one who will understand. तो हम ये समझते हैं कि समझना है, ठीक है, आ गए हैं. तो इस कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे है? Where does the conflict start? Well, you'll be amazed to know that the conflict starts from us, the human beings, the Gyan Avastha. To understand this conflict, let's understand the natural order first. So we have the first component in the natural order is the mineral world, the Padartha Avastha. Then we have the plant world, the Jeeva Avastha, which is seed centric. एक आम के पेड़ से एक आम का पेड़ निकलेगा, एक केले के पेड़ से केला निकलेगा, which is seed centric. The next we have is the animal world called the Pran Avastha, which is breed centric. एक शेर का बच्चा शेर बनेगा और उसकी अपनी क्वालिटीज होंगी. एक गधे का बच्चा गधा बनेगा और उसकी अपनी क्वालिटीज होंगी. It is breed centric. Then comes us, the top of the chain of the food order, the human world, the Gyan Avastha. We are understanding centric. समझने के लिए आए हैं हम यहाँ. समझना है थ्रू भाव, विचार, वंश और शरीर. एक इंसान का बच्चा इंसान की तरह दिखेगा, रंग अलग हो सकता है. He could be white, black or brown, but वो करेगा क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग पे निर्भर है. यहाँ we get different from in the natural process. And to understand this, we must understand our roles first in family, parivar. If we have a good understanding in family and in हमारे परिवार में शांति होगी. If we have a good understanding in our society, हमारे समाज में संतोष होगा. If we have a good understanding with nature, हमारी व्यवस्था होगी. If we understand nature और हम अच्छी व्यवस्था बनाते हैं तो प्रकृति में आनंद होगा और आनंद ही हमारा सबसे बड़ा पर्पस है. So the second principle, we come to the second principle now, which has 3 parts. और ये बड़े ध्यान से सुनिएगा आप. इस पूरे ब्रह्मांड में all units are in order. The units are a part of the bigger order. And please remember the very important part, existence is in coexistence. So we have stories coming from these 3. I will try and explain to you in small stories. Everybody is a part, all the units are in order. Number 1, हर चीज अपना रोल अदा करती है. आप फूड देख लो, एक छोटे एनिमल को बड़ा एनिमल खाता है, बड़े एनिमल को बड़ा एनिमल खाता है, and everything is in the process and used in nature. And we have to coexist. Unless and until we all exist together, there will always be problems. You are seeing global warming, nature at its most furious worst these days. That is because we have made it so. हमारी अंडरस्टैंडिंग में कमी रही है, जो उसका रिजल्ट है दैट हमारा नेचर अशांत है आजकल. So we have 2 qualities that makes us different from the animal world. Please understand. We have 2 qualities that makes us different from the animal world. The number 1 being kalpnashilta, the power of imagination. And the second being karya kushalta, the power of putting our dreams into reality. So we have something that it makes us different from the animal world. These are the 2 aspects that makes us different, and we have the power of thinking. That comes to us with the third principle, principle number 3,
Every human being has the urge to know and learn, and this eagerness is equal. सबको समझना है और समझने का जो ज्ञान की अवस्था वो इक्वल है. इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. तो समझने की इच्छा एक सी है सब में और समझने का कंटेंट भी सेम है. एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले सवाल पूछने लगता है, ये क्या है, ये पंखा है तो क्यों है, कैसे चलता है. तो सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है एंड अनफॉर्चुनेटली पढ़ना एक अस्वाभाविक क्रिया है. It's natural to learn and unnatural to study. So moving on, we come to the principle number 4. The content of learning is the same in human beings. जो उसका content है वो same है. Example इसका ये होगा कि nature has everything and it has its own principles. अब मैंने अगर लाल चश्मा पहना है तो मुझको सब कुछ लाल दिख रहा है. अगर किसी ने हरा चश्मा पहना है तो हरा दिख रहा है, जबकि दुनिया हो सकता है सफेद हो. तो हमें अपने चश्मे उतारने हैं और जो जैसा है उसको देखना है. So let me do a quick recap for all of you, and whatever you do not understand you can write it in the comment box and I'll try and answer as many questions I can. So rule number 1 was हम जिस चीज को समझ पाते हैं हम उसके साथ जी सकते हैं. Rule number 2 of nature or principle of nature, all units are in order. A, B, they are a part of the bigger order, and C, existence is in coexistence. Every human being has the urge to know and learn. This eagerness is equal in all human beings. Principle number 3. Principle number 4, the content of learning is the same in human beings. So with these principles, we will be ending today's episode. And you also learned the difference of in human beings and animals is kalpanashilta and karya kushalta, the power of dreams and the power of putting your dreams into reality. So what happens if you're not able to understand? These are the small principles, and if any principle we are not able to understand, we put the nature in jeopardy. And you can see the problem that we are facing today: global warming, pollution, exploitation, etc. So in the next episode, हमारे episode में अगले वाले में, we will cover and understand the problems of 800 million people of the world. Please believe me, if we can understand the next episode, it will solve the problem of 800 million people on this planet. It is the difference of me and the body. The needs, the emotions, understanding in detail will in all these we will do in our next chapter is called the body and me, an emotional solver, problem solver. So hoping to see you soon. Till then, it is Namaste from India. और मैं एंड में कहूँगा या याद करूँगा मदन मोहन दानिश की बहुत प्यारी लाइनें हैं. पहले पत्थर खुद को पत्थर करता है, फिर जाकर कुछ कारीगर करता है. अगर आप कारीगर बनना चाहते हैं तो अपने आप पे काम शुरू कर दीजिए. थैंक यू.